civilizational impact on the civilization of this land. And over the course of the next half hour, we will talk about this in greater detail, because on the 22nd of January, 22 January 2024, the Pran Pratishtha of the Shri Ram idol will take place at the Shri Ram Janmabhoomi. ये प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल रूप की हो रही है जन्म स्थान पर, जन्मभूमि में। इसका इतना महत्व क्यों है? मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति दो महान ग्रंथों पर आधारित है, रामचरितमानस या रामायण, और दूसरा महाभारत। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, दूसरी तरफ लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। और भारतीय संस्कृति का जो एक स्वरूप है, जो एक कंपोजिट कल्चर का मामला है, जो एक हार्मोनी है, जो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है, पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है, साधारण को विशिष्ट के दर्जे में लाती है, विशिष्ट को साधारण के मार्ग तक ले जाती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान राम अयोध्या के राजकुमार या यहाँ के महाराजाधिराज नहीं हैं। वे राजपाट का त्याग करके वनवासी होते हैं और अपने पिता का वचन निभाते हैं और दूर किष्किंधा होते हुए लंका तक जाते हैं, रावण वध करते हैं और सीता माँ को लेकर के आते हैं। तो जो उनके ज़िंदगी की मर्यादा है, जो उनके ज़िंदगी से निकलने वाला पाठ है, मुझे लगता है कि वो चीज़ प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर जब भगवान के स्वरूप का, बाल स्वरूप का यहाँ पर होगा, तो वो पूरे भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक बड़े रूप में प्रतिष्ठापित होगी। गौरव का क्षण है और ये मनुष्यता के गौरव का क्षण है। ये गौरव का क्षण जरूर है, अवश्य है। ये पूरी सनातन सभ्यता के लिए, इस देश की सभ्यता के लिए ये गौरव का क्षण है। लेकिन केवल इस देश के लिए नहीं, इस पूरे क्षेत्र के लिए। मैं आपको जनकपुर लिए चलना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू टेक आवर व्यूअर्स स्ट्रेट टू जनकपुर, the land of Ma Sita. Rohit Singh, my colleague, joins me from Janakpur. And Rohit, water from all the holy rivers from Nepal being sent here for the finally, after maybe 500 years, they've got access to their land where a Ram Mandir is coming up. Take a look at this report that I filed a few hours back. The Divya Bhavya Ram Temple here at Ayodhya. Work on at a very, very fast pace to ensure that construction for phase 1, that's the ground floor of the temple, is completed before the 22nd of January. That's where the consecration of the temple, or the idol of Lord Ram, or Ram Lala, a 5-year-old child Ram, will be installed here at the temple. Now, what's happening right now? Cement work is happening, stone work is happening, Makrana marble is being used for flooring on the ground floor. So that's the work that's happening right now. That's point one. Point two, if you look at this Parkota wall that is being made, this is 14 feet wide. Let me tell you more about the Parkota wall, and let's try and get you closer to the Ram Temple. We'll come closer to the Ram Temple to be able to show you the effort that is happening right now. Now, these stones, Bansi Paharpur stones, have been brought from Rajasthan. These stones are being used for this temple. Apart from the Bansi Paharpur stones, granite has been brought in from Karnataka. Granite has been brought in from Karnataka for this construction work, for the Ram Temple construction here at Ayodhya. This is going to be spread over 20 acres of land. The entire land which the Hindu side got was 70 acres. Let's try and get you closer to the Ram Temple. I'll ask our camera person Sachin Chandok to come closer as we move closer to the Shri Ram Temple at Ayodhya. This is the work that's happening. Road construction activity happening simultaneously. And as we go closer to the temple, you can look at the kind of stone that is being used here. अब आप हमें समझाने का प्रयास कीजिए। हाँ। अभी हम इसमें उत्तर दिशा में मंदिर की साइड खड़े हैं।
तो ये हमारा ईस्ट साइड जो पूर्व दिशा है वो मंदिर की एंट्री है जी। मेन एंट्री जो वहाँ पे दिख रही है वो हमारा परकोटा है जहाँ से पिलग्रिम्स आएंगे, दैट इज़ द मेन एंट्री। जो रामपथ से होते हुए वहाँ से होते हुए यहाँ से अंदर घुसेंगे, पोडियम पे आएंगे कोर्टयार्ड में, यहाँ से अंदर जाएंगे, यहीं से लाइन लगेंगे और सामने अंदर गर्भगृह है जी। ये हमारा पूरा ये इस तरह से यहाँ पे हम खड़े हैं। तो यहाँ जो मुख्य परकोटा है जो ये कहा जा रहा है 14 फीट चौड़ी दीवार है, ये मुख्य परकोटा अभी जो हमारा प्रायोरिटी देखिए, परकोटा चारों साइड फैला हुआ 800 मीटर का है जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। अभी जो हमारा प्रायोरिटी का वो एंट्री का है, वो एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो आपको दिख रहा है अभी 10 दिन के अंदर ये स्कैफोल्डिंग वगैरह सब निकल जाएगी और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और जो 6 मंदिर वो सप्तऋषि मंदिर हैं, उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। वो हमारा सेकंड फेज में जनवरी के बाद स्टार्ट करेंगे। वो हमारा साउथ दिशा में दक्षिण की तरफ है वो। और जो परकोटा पे मंदिर बन रहे हैं, परकोटा में हमारे ये कोने पे 4 मंदिर हैं, इनकी फाउंडेशन हो गई है, इसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 2 मंदिर बीच में है, ये काम भी हमारा जनवरी के बाद शुरू होगा। गर्भगृह अगर पूछे तो गर्भगृह कहाँ? गर्भगृह हमारा पश्चिम दिशा में है जी। ये पीछे हमारा प्रार्थना कीर्तन मंडप है, फिर उसके पीछे बीच में गर्भगृह है। 3,500 workers are working round the clock. Let me get you closer to some of these complexes so that we can show you where the temple is being constructed. Now, these are the workers. क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? जी, झारखंड से। मैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र, क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? वो इसका फोल्डिंग काम कर रहा हूँ। स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ से आप? बहराइच से। आप बहराइच से? तो उत्तर प्रदेश से ही आप। तो क्या काम करते हैं आप यहाँ? हेल्पर का काम करते हैं। अरे बहुत भी बढ़िया। और आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल मौर्य। क्या करते हो आप? प्लास्टर का काम करते हैं। तो कब से काम कर रहे हो यहाँ? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आपको? मेरा 1.5 महीना हो गया। हाँ, क्या नाम है आपका? राम मंदिर। अच्छा, और आप क्या काम करते हैं? हम सिविल का काम करते हैं। तो इस तरह से there are 3,500 workers who've been working round the clock for the construction of the Ram Temple. There is a history. This part of the temple is at its narrowest. If we could show you the temple at its narrowest here, because this was the plot where that mosque structure was. That mosque structure, after the Supreme Court order, this land has now was given to the Hindu side, and that is where construction activities started virtually round the clock. It will happen in several phases. What's unique in this temple is that there is no iron that is being used. When you talk about RCC, there isn't reinforced concrete that's being used here. There is stone dust is being used instead of sand, and that is to give it more in the base, that is to give it more strength. And the levels, 14 meters, when you talk to engineers on ground, 14 meters of base has been created across 6 acres of land. So that shows you the wide area where the base was created, and then granite was brought in. Granite was brought in from Karnataka for strengthening the other levels before stone construction has started. Now this is floor 1, some parts of work on floor 2, and then the shikhar will be 161 feet. That will be the height of the temple here at Ayodhya. Does the Ram Temple unite our entire country in one bond, as many argue? पूरा देश एक सूत्र में पिरोता है, और क्या वो इस मंदिर में रिफ्लेक्ट करेगा? भगवान श्री राम का चरित्र तो हमेशा से पिरोता है, और सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे अखंड विश्व को। जहाँ भी सनातनता के चिन्ह है, जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह की धर्म, राज और न्याय की व्यवस्था है कि त्याग सर्वोपरि है, सम्मान सर्वोपरि है, दूसरे को उसका हक देना सर्वोपरि है, वहाँ हर सभ्यता में श्री राम जैसे चरित्र की उदात्तता होगी, भगवान राम की पूजा होगी। सारी सभ्यताओं में श्री राम प्रभु की ही एक मान्यता है कि जब वो राज सिंहासन में बैठते हैं तो उनके साथ माँ जानकी होती हैं, सीता जी साथ बैठती हैं। आप किसी भी रॉयल थ्रोन पे राजा को बैठे देखेंगे, अकेले रानी को बैठा देखेंगे जहाँ मैट्रियार्की है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि राजा रानी साथ बैठ के राज्य संचालन करते हो। ये छवि तो राम राज्य ही देती है। तो मुझे लगता है कि इसको
तो ये पूरी एक सूत्रता में पिरोने की बात है और वो किसी भी धर्म संप्रदाय मत वाद किसी भी तरह के वैचारिकी से बहुत ऊपर है, क्योंकि वो एक दर्शन है, वो एक दर्शन है और उस दर्शन को समझना होगा, उसको मानने का, उनकी पूजा अर्चना करने का, उनकी उपासना करने का मामला धर्म बनता है। लेकिन अगर अध्यात्म और विचार के स्तर पे ले तो श्री राम बहुत ऊपर हैं। शायद इसीलिए महात्मा गांधी राम राज्य की अवधारणा पर जोर देते थे कि आदर्श समाज कैसा हो जहां राम राज्य हो। आदर्श समाज, एक राम राज्य। आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और इस पर चर्चा करेंगे आने वाले कई दिनों में, बट फॉर द मोमेंट आई वांट आवर व्यूअर्स टू टेक अ लुक एट व्हाट इज श्री राम धर्म पथ। सूर्यवंशी राजा राम, he is a Suryavanshi and this path reflects that. But are we moving towards that Ram Rajya that was envisaged, a land where there's justice for all? Clearly still a far cry given the kind of politics that's escalated on the Sri Ram Janmabhoomi consecration ceremony on the 22nd of January. The opposition, the CPIM, they've decided to stay away. The Congress looks at electoral politics of the BJP in the consecration ceremony on the 22nd of January. I bring you more in this report. मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी रघुकुल रीति सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाई. The city of Ayodhya is busy preparing for the Pran Pratishtha of Ram Temple, slated for January 22nd, 2024. With less than a month left for the grand event, a political squabble has broken out, with the opposition targeting Prime Minister Narendra Modi. Congress claimed Modi spends all his time in temples and India should not become a Hindu Rashtra. The BJP accused Congress of being ignorant of India's reality. We have seen that the nations based on religion, whether it is Israel or Pakistan, are very different from nations built on democracy, freedom, human rights, diversity, inclusion, like America. That's what we want. Sam Petroda is a very good example of how far removed Congress and Rahul's Congress in particular is from the psyche of India, from the soul of India, from what Indians and every Bharatvasi wants. When nation is all involved in Ram Temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. इनके टारगेट करने से क्या होता है? भारत सेक्युलर है और सेक्युलर इसलिए है कि यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है। 66 ऐसे देश हैं जहाँ पे हिंदुइज्म को एक धर्म के रूप में भी नहीं मानते। सैम पेट्रोडा जी से जरा जाके ये बात पूछिए कि वो चाहते क्या है। Even priest of Ram Temple hit out at Congress's Sam Petroda, accusing him of spoiling the religious atmosphere in the temple city. जिन लोगों ने राम मंदिर बनने में रोड़ा पैदा किया था, आज उनको जरूर परेशानी हो रही है। उनकी जो पीड़ा है वो स्वाभाविक है। पता लग रहा है कि जो राक्षस हैं, जो राक्षस लोग हैं, वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि दैवी प्रकृति के लोग जो हैं, जो राम भक्त हैं, वो खुशी मना रहे हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है। The opposition rank planning to boycott the Ram Mandir unveiling is set to swell, with West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and ruling TMC set to stay away from Ayodhya. Left and several Muslim Samajwadi Party MPs are already abstaining. Bureau Report, India Today. Regal columns and a reflective pool. A spiritual resonance. A timeless reverence. A celestial symphony dedicated to Surya Devta. According to ancient religious texts, Lord Ram is a Suryavanshi.
a descendant of the sun god. The Surya Kund mirrors the celestial reverence for Bhagwan Surya near the sacred grounds of the Ram Temple in Ayodhya. The Surya Kund has its mythological importance, and we are here inside that particular premises which has that mythological impact. It is being said that Lord Surya Narayan wanted to take blessings from the Bal Roop of Lord Sri Ram, and for which for around a month his Rath stayed at this particular place, and due to which Ayodhya did not see night for around a month in the Treta Yuga, as mentioned in the Chaupai of Ramcharitmanas. A serene sentinel of devotion, steeped in faith. ये जो कुंड देख रहे हैं आप, इसका निर्माण राजा दर्शन सिंह ने करवाया है। जब उनको कुष्ठ रोग था, वो अपना इलाज सभी देश विदेश सभी तरफ करवाए, परंतु कहीं ठीक नहीं हुआ। वो पानी ले जाकर के राजा को दिए, राजा ने जैसे जलपान किया तो वो जल जहाँ जहाँ उनके शरीर में गिरा वहाँ का कुष्ठ रोग सही हो गया। अब अपने महल में गए, रात्रि को विश्राम किया। सूर्य भगवान उनके स्वप्न में आए और उनसे बोले कि त्रेता युग में हम यहाँ आए थे, यहाँ पे हमारा चरण पड़ा है, इसके प्रभाव से आपका कुष्ठ रोग सही हो गया। और उनसे बोले कि आप यहाँ पे कुंड का निर्माण कराइए, जैसे आपको लाभ प्राप्त हुआ है वैसे मेरे अन्य भक्तों को भी लाभ प्राप्त हो। The sun never sets in Ayodhya. Surya Stambhs stand as sentinels along the Dharma path in the historic city. As Lord Rama was a Suryavanshi king, you can clearly see a total of 25 Surya Stambh pillars. The Surya pillars are being erected around the roads of Ayodhya, and this is the evening time, and you can clearly see how beautifully these are glowing. The pillar is 6 feet high and 5 feet in diameter, and a 10 mm circular glass light has been installed atop each pillar. The pillars have integrated carvings and reflect similar designs as installed in the Ram Mandir. Each pillar is 5 feet in diameter, topped with a circular glass light. Intricate carvings mirror the design of the Ram Temple. Surya Stambhs installed at 25 locations in Ayodhya. With Samarth Srivastav in Ayodhya, Bureau Report, India Today. And there is tremendous excitement in the air here at Ayodhya. The older generation, they can't believe that the Ram Temple is actually happening. The younger generation, they just cannot wait to learn and understand what this excitement is all about. And this generation is actually seeing history being made. A Ram Temple at the Ram Janmabhoomi at Ayodhya is truly being hailed as a civilizational moment for Bharat. But what will this temple look like? I want to leave you with these images of what the Divya, Bhavya, grand Ram Temple at India Today TV dominates 2023. A year of non-stop news breaks. They have claimed that they have 40 MLAs on their side. You just heard those sounds of the blast. Leading from the front in a world at war. India Today reports from the front lines at the Gaza border. Uninterrupted setting of national agenda. Insight, credibility, and unmatched perspective. Maximum experience equals maximum viewership. India's maximum channel. It is off-season second day when whole Delhi and NCR covered with the dense blanket cover of the fog. Right now you can see straight from the visuals how the commuters facing hard to go their destinations. That's why they keep their headlight and fog light on to ease. Right now you can see near the Akshardham area how the commuting toward the destination is a
tough task today due to dense fog, and the Ayodhya Ram Temple will not be visible with the dense fog. Weatherman has clearly suggested that this kind of weather will continue till 1st of this January, and the cold wave will continue, and that is why for today's the orange alert also has been released by the forecast department. With camera person Ankit Singh in Delhi, it's Ram Kinkar Singh for India Today.